લક્ષ્ય ન્યૂઝ, એક નજર, એક લક્ષ્ય. સુરત શહેરના ઝોન 3ના ડીસીપી રાઘવ જૈનના અધ્યક્ષપદે ગણેશ મહોત્સવ અને ઈદે મિલાદના તહેવાર નિમિત્તે શાંતિ સમિતિની બેઠક યોજાઈ. ગણેશ મહોત્સવ અને ઈદ મિલાદના તહેવાર નિમિત્તે અત્રેના શાહપુર સ્થિત પટણી જમાત ખાના હોલ ખાતે શહેર ઝોન 3ના ડીસીપી શ્રી રાઘવ જૈનના અધ્યક્ષપદે એસીપી શ્રી આર આહિર અને શ્રી એલ.બી. ઝાલાના અતિથિ વિશેષ પદે તથા મહિધરપુરા લાલગેટ ચોક બજારના સિંગણપુર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર સર્વશ્રી એન.એચ. બ્રહ્મભટ્ટ, એન.એમ. ચૌધરી, એન.જી. ચૌધરી, વાય.બી. ગોહિલના ઉપસ્થિતિમાં શાંતિ સમિતિની બેઠક મળી હતી, જેમાં હિન્દુ મુસ્લિમ સમાજના આગેવાનો સહિત ગણેશ ઉત્સવ સમિતિ, સિરાતુન નબી કમિટી, ઈદે ઉલાન નબી કમિટીના સભ્યો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. દુંદાળા દેવની આરાધનાના તહેવાર ગણેશ મહોત્સવ, ત્યારબાદ ગણેશ વિસર્જન યાત્રા અને ઈદે મિલાદના પર્વની ઉજવણી અંતર્ગત નીકળનાર જુલુસો હર્ષ ઉલ્લાસ અને ધાર્મિક કોમી ભાઈચારા સાથે સંપન્ન થાય એ હેતુથી આયોજિત આ મીટિંગમાં ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તંત્ર દ્વારા આગેવાનોને સલામતી અને સુરક્ષાના વિસ્તૃત પગલાં લેવામાં આવ્યા હોવાનું જણાવી આયોજકોને શાંતિપૂર્વક અને ઘટનામુક્ત ઉજવણી સુનિશ્ચિત કરવા માટે કડક માર્ગદર્શિકાનું પાલન કરવાના આદેશ અને નિર્દેશ અપાયા હતા. તહેવારો શાંતિભર્યા વાતાવરણમાં સંપન્ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી હતી. મીટિંગમાં એસીપી શ્રી આર આહિર અને શ્રી એલ.બી. ઝાલાના માર્ગદર્શન પછી ઝોન 3ના ડીસીપી શ્રી રાઘવ જૈને સમાપન દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે આ ઉત્સવ આનંદ, શાંતિ અને અનિચ્છનીય ઘટનાઓ વિના ઉજવાય તે માટેનું આયોજકો પાસેથી સંપૂર્ણ સહયોગની અપીલ સાથે નાગરિકોને કટોકટીની સ્થિતિમાં પોલીસનો સંપર્ક કરવા જણાવ્યું હતું. આ બેઠકમાં સામાજિક અગ્રણીઓ સર્વશ્રી દીપેશ મહેતા, અસદ કલ્યાણી, સિરાજુદ્દીન સૈયદ, મુસ્તાક કાનુગા, રીતેશ સોલંકી, બિપિન પટેલ, મોહસિન મિર્ઝા વગેરે પ્રાસંગિક સંબોધન કર્યું હતું. પોલીસ સમન્વયના મીડિયા કન્વીનર શ્રી કમલેશ પારેખે સમગ્ર મીટિંગનું સંચાલન કર્યું હતું. લાલગેટ પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી એન.એમ. ચૌધરીએ કાર્યક્રમના પ્રારંભે ગણેશ વિસર્જન યાત્રા અને ઈદે મિલાદનું જુલુસ અંગે તકેદારી વિશેની સમજ આપવાની સાથે જ સ્વાગત તથા કાર્યક્રમના અંતે આભાર દર્શન કર્યું હતું. आज यहाँ पर जोन 3 में जितने भी पुलिस स्टेशन बनते हैं उनमें जितने भी हिंदू और मुस्लिम आगेवान हैं उनको एक साथ एकत्रित किया गया है. आने वाले दिनों में जैसे कि हम जानते हैं कि गणेश उत्सव और ईद का त्यौहार है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी सूचनाएँ हैं, जितने भी उनके मुद्दे हैं उनको सुना गया. पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सूचनाएँ हैं वह दी गई. पुलिस प्रशासन क्या क्या काम कर रही है, जैसे कि पेट्रोलिंग हो गया, रेगुलर व्हीकल चेकिंग, सीसीटीवी कैमरा, उसका इन सबको ज्ञात किया गया. और साथ ही साथ हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, हम ग्रास रूट लेवल तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ताकि आने वाले त्योहारों के दिनों में किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर इशू ना बने. जैसे कि हमने इतिहास में देखा है, कुछ 1-2% लोग शांति भंग करने की पूरी कोशिश करते हैं. बस पुलिस प्रशासन में पूरा ये एम रहेगा कि इस प्रकार किसी भी तरह का कोई भी बनाव ना बने. हम हर गली 24 घंटे तैनात रहेंगे. जितने भी आगेवान हैं उनके साथ हमारी बातचीत रहेगी ताकि आने वाले दिन शांतिपूर्वक व्यतीत हो. सर ईद मिलाद और गणपति का विसर्जन एक ही दिन आ रहा है, इस तरह की अपील की जाएगी जी. जैसे कि हमें पता है कि दोनों त्योहारों का जो दिन है वो ओवरलैप होता है, परंतु जो जितना भी मुस्लिम समाज और उनके आगेवान हैं उन्होंने यह जारी किया है कि जो भी ईद का जुलूस है वो 7 तारीख को निकाला जाए. तो हमारी तरफ से बहुत आभार है क्योंकि ये डिसीजन लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है. और जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू भाई हैं चाहे मुस्लिम भाई हैं, जितने भी लोग हैं जो त्यौहार मनाना चाहते हैं अच्छे से शांतिपूर्वक, उन सब के लिए डिसीजन बहुत ही एक अच्छा डिसीजन कहा जा सकता है. क्योंकि ऐसा है कि जब दो त्यौहार आपस में आते हैं तो बनाव बनने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, परंतु ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है. और पुलिस प्रशासन पूरी कोशिश करेगी कि जिन दोनों त्योहारों में अपना वो पूरा सहयोग करे और किसी भी तरह का बनाव ना करे. त्यौहार के समय सर कितनी फेक वीडियो जो सोशल मीडिया पर घूमते हैं, उसके लिए सर किस तरह का मैसेज दिया? मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन का एक डेडिकेटेड साइबर यूनिट है जो इस तरह के फेक मैसेजेस, फेक जो सूचनाएं हैं उस पर काम करता है.
और जिस तरह जैसे ही हमें पता लगता है कि कोई भी एक इन्फॉर्मेशन लोगों में जारी की जा रही है जो एक तनाव का माहौल पैदा कर पाए, उसको तुरंत ही डिलीट किया जाता है। वो एक पूरा एल्गोरिथम, एक पूरा सिस्टम साइबर यूनिट के पास पहले से डेवलप्ड है जिसमें काम किया जाता है। સર ગયા વર્ષે એકાઉન્ટ બનાવ બનેલો હતો, આ વર્ષે પોલીસનો શું પ્લાન હશે, શું એક્શન પ્લાન હશે અને લોકોને શું અપીલ કરવામાં આવશે? जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पिछले साल एक बनाव बना था, परंतु इस साल पुलिस पहले से ही पूरी तैयारी करके चल रही है। चाहे वो CCTV हो, चाहे वो पेट्रोलिंग हो, चाहे वो बंदोबस्त तैनात करना हो, पहले से ही होमवर्क किया जा रहा है। आगेवान के साथ मिला जा रहा है, गणपति समिति कमेटी के मेंबर्स के साथ मिला जा रहा है, मुस्लिम आगेवानों के साथ बातचीत हो रही है। ये ग्रासरूट तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि पुलिस जो है वो 24 घंटे ग्राउंड पर हाजिर है। किसी भी तरह का अगर कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट लगता है कि जो अशांति क्रिएट कर सकता है, वह जल्द से जल्द जानकर पुलिस कानूनी तरीके से सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सर अभी तक आपने